वेलकम बैक टू वीकेंड आउट। माय नेम इज गौरव। नाम तो सुना होगा। देखिए, माना जाता है कि म्यूजिक इज द वर्नाक्युलर ऑफ द ह्यूमन सोल। भाषा चाहे कोई भी हो, म्यूजिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन्फेंट्स आर मेड टू हियर मोज़ार्ट, क्योंकि इससे ये माना जाता है कि उनका ब्रेन जो है स्टिम्युलेट होता है। अब क्योंकि आप इन्फेंट्स नहीं है, हम आपको मोज़ार्ट नहीं सुनाएंगे, लेकिन म्यूजिक आपको डेफिनेटली सुनाएंगे। वी आर गोना टेक यू टू अ कॉन्सर्ट जहां पर यूफोरिया एंड स्ट्रिंग्स केम टुगेदर। Soundclash came to Dubai once again with two bands competing for the top spot. Two of Asia's greatest bands, multi-award winning Pakistani pop rock band Strings and veteran Indian rockers Euphoria were pitted against each other to compete for the affection of the crowd at the Red Bull Soundclash. The good thing about this event is it's, pushing us to do something different and thinking out of the box. So something that challenges us like that, it is definitely very interesting. And again, we don't come to Dubai that often. We try and come once a year. So this is a concert with Euphoria, and as Bilal said, it's a very different concept. So you're out of your comfort zone, and that's the best part, because it's not a normal show. You really have to practice and just see what you have to do. So it's interesting. We're very excited. See, it's called the Soundclash, but there's no clash of anything. I think it's a message of peace and message of brotherhood and happiness and music that Euphoria is carrying all the way from India. We want to encourage Narendra Modi Saab and Nawaz Sharif Saab to bury the hatchet and be one with each other, like Strings and Euphoria. Euphoria has been working towards this for many, many years, and the Strings have been our, comrades in arms for many, many years. With this concert, we want to send out a very, very clear message to both the governments. It's not about the people, it's not about the music, it's not about bands. It's about the governments making sure that there's happiness and peace both sides of the border. Voted by the audience, Strings went up against Euphoria for a 4-round friendly musical war. Rated by a unique applausometer cheer gauge, the cheers of the audiences decided the winner. The two versatile bands brought their sounds, styles and influences together under one roof. Where music is involved, you can't fight. It's about, bonding. It's about coming together. And especially, Pakistan and India, music has always played a very important role, bridging the gap. Music has no barriers. It has no borders. It has no frontiers. It has no army. It has no war. It has no ammunition. It has no guns. It has nothing. It just has love. And this band actually stands for this. There was a song of ours that I want to quote right now. है सांसों का आधार क्या और जिंदगी का सार क्या, बस जान लो है प्यार क्या, है ये यूफोरिया का मतलब. Happy Republic Day. A very happy Republic Day, guys. अब म्यूजिक की बात चली रही है तो इसी टॉपिक पर बने रहते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान से कई और आर्टिस्ट आए थे टू एंटरटेन द पीपल ऑफ द यूएई. A.R. Rahman, Sunidhi Chauhan and Ustad Rahat Fateh Ali Khan came together in a concert called the Dubai Sufi Weekend. अब आर्टिस्ट तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान से थे, लेकिन देखने के लिए इन्हें जो लोग आए वो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हर जगह से थे. The Dubai Sufi Weekend transported the fans into a mystical journey as the music maestros came together for a 2-day festival of Sufi music. This mega event was announced with a press conference which saw media presence in full glory. The Oscar-winning singer spoke about his connect with Sufi music. Sunidhi Chauhan and Rahat Fateh Ali Khan also expressed their excitement about singing together for the first time live on stage. I've rehearsed for the show. Generally, I don't get to rehearse because there's no requirement, and but this needed a special attention. This needed more love, and I want to feel loved. सूफी के जो लिसनिंग स्टाइल है वो बहुत मुख्तलिफ हो गया लोगों का, पूरी दुनिया का ही, जो जहाँ से उनको जो रूहानियत का टच मिलता है ना, वही सूफी है.
it took a lot of attention of mine. It took a lot of brainstorming, which songs I should select. At the same time, I wanted to sing those songs which are non-film songs, and probably not many people would know about them. But I know that they are deep, they are intense, and they will still get connected with the people. All of them, though, kept one little secret, and that was their surprise playlist for the event. अब म्यूजिक की बात चली रही है तो मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। एट सम पॉइंट इन माय लाइफ, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं एक बच्चा था, तब मैंने सोचा कि मैं म्यूजिक सीखता हूँ। तो मैं जिनसे म्यूजिक सीखने गया, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, जो अच्छे सिंगर्स होते हैं वो कभी भी यहाँ से यानी गले से नहीं गाते हैं, वो गाते हैं पेट से। आवाज़ पेट से, अंदर से निकलनी चाहिए। एंड आई थिंक इसी प्रोसेस में समवेयर आई रियलाइज कि पेट से आवाज़ निकालने से अच्छा है कि मैं पेट में खाना डाल लूँ। इसीलिए आई थिंक मैंने यही अपनी हॉबी बनाई, इसी को सीखा और आज मैं इतना खाना खाने लगा हूँ। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि व्हेन वी कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू अ सेलिब्रिटी शेफ कॉल्ड विवेक सिंह। Now, विवेक सिंह इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु रन्स अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट इन लंडन कॉल्ड सिनेमन क्लब। और वो यहाँ आए थे जबील सराय, जब हमने उनको पकड़ के ये कहा कि अब आप यहाँ आए हैं तो हमें कुछ इंडियन डिशेस बनाना सिखाइए, बट ये इंडियन डिशेस हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट।